यस, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। क्या देखने वाले हैं? जोर से बोलो ना। रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम यस, दिस इज कॉल्ड एज रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। यस, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा है? RETURN, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ओके, नाउ सी, अभी तक हमने क्या देखा है? सिर्फ वाइड देखा है, वाइड। यस और नो? वाइड, यस और नो? वाइड बोस्टन, यस और नो? ओके, तो वाइड मीन्स व्हाट यार? वाइड मीन्स व्हाट यार? इफ फंक्शन रिटर्न नथिंग, म्हणजे अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, देन इट्स टाइप इट्स वाइड, देन इट्स टाइप इज व्हाट ईयर? टाइप इज व्हाट ईयर? वाइड। यस, अभी तक हमने फंक्शन देखा, उसने कोई इंटीजर वैल्यू दिया क्या? नहीं दिया। फ्लोट वैल्यू दिया क्या? नहीं दिया। कैरेक्टर वैल्यू दिया क्या? नहीं दिया। हम अभी देखेंगे जो फंक्शंस वो इंटीजर वैल्यू देंगे, फ्लोट वैल्यू देंगे एंड सो ऑन। आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं देखा हमने अभी तक, हम आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे। हमने अभी तक एम्प्टी पैरेंथेसिस दिया है, राइट? नाउ दिस इज इंटीजर कैल्सम ऑफ व्हाट ईयर? इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर, yes or no? Semicolon. This function accept three integer values, yes or no? This is called as arguments, yes or no? This is called as what here? Arguments. And give one integer value, give one integer value. अभी तक हमारा कोई फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देता था, इसलिए हमने उसको वाइड लगाया था, right? Now this function give one what here? Integer value, accept three integer values. This is called as arguments, yes or no? This is called as what here? Arguments. And this is called as prototype, means in the later part we define one such function, उसका हमने मॉडल दे दिया, right? In this model, three arguments, one return type value, okay? And this is a prototype of this function, void main in this main, in this main. Integer a equals to daha, yes or no? B equals to this, C equals to what here? These. Yes, this is a three variable, comma sum is another variable, okay? Now here sum equals to what here? Calsum of what? A comma B comma C. Yes, A comma B comma C, A comma B comma C. Yes, and this is a printf, what here? Printf what? Yes, sum is of type integer. कॅल्सम फंक्शनला आपण सुद्धा त्याला टाईप इंटीजर दिलेला आहे. जे काही इंटीजर व्हॅल्यू येईल त्या या समला असाइन होणार आहे आणि ती व्हॅल्यू आपण काय करणार आहोत? प्रिंट करणार आहोत. य सम इक्वल्स टू व्हॉट यर? कॅल्सम ऑफ सम इक्वल्स टू व्हॉट यर? %d. सम इक्वल्स टू व्हॉट? %d कॉमा सम. सम आउटपुटला आपण प्रिंट केलं. येस ऑर नो? yes, and this is a closing of this. And here integer what here? Calsum of what? Integer comma integer x comma integer y comma integer z. Yes, integer x comma y comma z. And here return x plus y plus z, and this is a closing of this semicolon, and this is a closing of this, right? And see here what happened in this, right? इथून हे कॉल होणार आहे. yes or no? Control is transferred to this x y z means what? It's a 30 20 and what 10 20 30. याचं इथं सम कॅल्क्युलेट होणार आहे आणि जे काही सम कॅल्क्युलेटर होणार आहे ते फंक्शन रिटर्न करणार आहे. कोणाला? इथं रिटर्न होणार आहे आणि ते समला रिटर्न होणार आहे. ओके, नाव सी हियर टू रन दिस प्रोग्राम. Here this is a F8. Yes, there is one error. What happened? This is a stdio.h. What here? Hash include what here? Hash include stdio.h. Hash include what here? stdio.h. Here F8.
right? And in this again f8 now here f7. Okay, this is call. During call, control transfer to the function definition. Function definition. Here x equals to what? 10, y equals to 20, z equals to 30. This is a return to what? Here function को return होता है और collected into the variable sum and printed in the output. And this is the output of this program. See here 60, right? This is what here, this function having 3 argument of type integer, and this function return one value of type integer. This function return to this function this return statement return to the function calsum. This sum is collected into this sum, okay, and printed in the output. Yes, this is called as what here, returning value from function. Okay, and next हम देखेंगे